लेकिन यू विल बी कन्वर्टिंग द कन्वर्टेड, वो तो वैसे ही आपके फैन है। तो कहने नहीं, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उनसे मिलूं। मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि इससे पहले हमको किसी ने इस तरह की फरमाइश की है कि इन लोगों से मिलना है। यहाँ मेधा जी, आमतौर से तो जलसों में हज़ारों और लाखों लोग होते हैं और ट्रकों में और बसों में भर के आते हैं, लेकिन वो एक कहावत है कि बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये बंदे वो हैं जिन्हें आप तोल सकती हैं, बड़े भारी हैं। इनमें से हर एक जो है, एक एक इंसान जो इस छत के नीचे बैठा है, वो अपने काम का मास्टर है। यहाँ डायरेक्टर्स हैं, यहाँ राइटर्स हैं, यहाँ म्यूजिशियंस हैं, यहाँ सीनियर एडिटर इन चीफ हैं, यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं जो बरसों से काम में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ मेधा जी बैठे हैं, वहाँ जावेद आनम साहब बैठे हैं। तो हर तरह पेंटर्स हैं, ये हमारी बहुत बड़ी पेंटर वहाँ बैठी हुई हैं, चंदा वदे जी। तो थिएटर के लोग बैठे हैं, सचिन। तो ये एक बिल्कुल इलस्ट्रियस ग्रुप है जो कि बहुत ही कीन था आपसे मिलने, और बहुत ही इनके अंदर इंथुजियाज्म और बहुत मोहब्बत आपकी और इज्जत है आपके लिए। तो हम लोगों ने सोचा ये है कि पहले आपको थोड़ा बोल दें, इसलिए कि आवाज़ तो मेरी तो नहीं सुनना चाहते लोग, वो आपकी सुनना चाहते हैं। एक उसके बाद हम कुछ 10-12-15 लोग हैं जो आपसे क्वेश्चन करेंगे विद इन अ मिनट और 1.5 मिनट। उसका आप छोटा छोटा जवाब देती रहेंगी सबको, और एंड में फिर एक बार आपको बोलना है वाइंड अप पे। तो आपसे शुरू होगा, आपसे खत्म। चलिए। थैंक यू सो मच जावेद जी, विमन जी, पवन जी, महेश जी, हमारा जाने माने सब बहुत बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल्स एंड civic society people, ex-judges, editors, journalists, my all cultural people from different sectors, and my brothers and sisters. I am really honored and delighted to meet all of you. It is my proud privilege. I convey my humble regards to all of you. And I convey my best wishes to all of our cultural people and the society, the civic society, and also the Maharashtra, all the brothers and sisters. I think Maharashtraच्या सर्वप्रबुद्ध जनतेला माझे विनम्र अभिवादन आणि माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। আমাদের হার্দিক শুভেচ্ছা আপনাদের সকলকে, सबको लिए। I don't want to speak more because time is too short. It will be, I like to interact with the people. Instead of giving the speech just like technical and this habit, the politicians, the habit is to give more speech, talk more, walk less. So I don't like this. I want that talk less, walk more. Only Javed ji, Kulkarni ji, Pawan ji all requested me to say something about Bengal. It is a big history. I cannot say right now all the details. But you know that we are celebrating this year, the next year also this 75 years of our independence. So Lal Bal Pal, there is a bridge between Bengal and Maharashtra. The Lala Rajpath Rai, Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak. Even Rabindranath Tagore, this Marathi, the Bir, Shivaji, how Rabindranath Tagore wrote a poem in favor of Shivaji that everybody knows. So our relation is very good. We want to build up that relation. And Mumbai is a financial capital of India. You have the cultural capital also. And there is a bridge between Maharashtra and Mumbai and Calcutta. We also do the cultural festival, film festival, this Tele Academy, we have the music academy, the Lok Posha Shilpi, we give help to the 2 lakhs, more than 2 lakhs, the rural artisans, this artist, especially the pension, more than 2 lakhs artists we have. Like this in Bengal, only in a short while I can tell you that we have the free ration, what Medhaji will be very happy to see. We give free ration to each and everybody. Number 2, we have the free health. Hospital is totally free. From kidney operation to heart operation, all free.
free medicine we give. And instead of that, we have one Shastra Sati project that women of the family is the empowerment. They get smart card. They can spend for more than, they can spend 5 lakhs for the family in private hospital also. We have full free education. For girl child, all the government schools, colleges and universities, they get Kanyasri. And we have got #1 award from United Nations for public program. So ration is free, education is free, health is free. We give free tree plantation also. When a newborn baby born, we give a good tree so that it can also be built up and it will be useful for them. Like this, we have the scholarship for the general students, the minorities, the Christians, all. And we started Lakshmi Bhandar to empower the women. We give 500 rupees every woman of the family so that it is there. They can spend this money for their own purpose. And who are the scheduled caste scheduled tribes? They get 1,000. We give all the widow's pension. We give farmers every year Kishan Bandhu scheme and 10,000 rupees we give to the Kishans. The Kishan crop insurance, it is absolutely free. Whatever the insurance, government gives. It is not the farmers. Even if a farmer died, their family also get 2 lakhs rupees. All. So we have so many programs. For students, we are giving smart card. Government is doing we have done the insurance for that. 10 lakhs up to 10 lakhs rupees for their education purpose.